Hey everyone, welcome back to PM by Botany Academy and this is Pratiksha Misra as always. जमती कि मु टेलीग्राम ग्रुप रे ऑलरेडी इन्फॉर्म कर देथिली कि आज आमे बॉटनी ऑनर्स पिला मानकर थर्ड सेमिस्टर कोर 5 कोर 6 कोर 7 तीनटा जंक पेपर रो इंपोर्टेंट सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोट डिस्कशन करिबा तो सेत पे आज का वीडियो बहुत स्पेशल आज फर्स्ट कोर 5 पेपर रो एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म रे कौन इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कौन इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स रही से विषय में टोटाल एवं कहीदेवी बास आपण मैंने पेन एंड पेपर बाहर करके बसंतु सिलेबस समस्त को देखा जाउथबा स्क्रीन ऊपर सिलेबस रे स्क्रीनशॉट रखंतु एंड सिलेबस को प्रथमे आपण नोट्स रो पछपटे लिखि रखंतु सिलेबस लिखि रखिबा दरकार एंड सिलेक्शन क्वेश्चन मध्य फास्ट लिखि रखिबा दरकार क्वेश्चन एंड सिलेबस लिखिकी रखिले ही आपण माने जानि परिबे आपण मनकर सिलेबस रे कौन अछि आपण माने जतले पढिबे सेतबेले जानीपारे आम प्रिपेरेसन केमतिका चलती केतेटा क्वेश्चन आम पढ़लु केतेटा क्वेश्चन छाड़िलु आउ केतेटा क्वेश्चन रहिला ए सब पूरा टेक्निक करके भल भाव आपण मैंने जानीपारे से मुझे बारंबार कहूँ सिलेबस लिखि रखंतु एंड एबे मु जो भी क्वेश्चन कहबी से सब किसी को आपण लिखि रखंतु मु स्लो रे डाकुचे जदि को मैंने लिखि न पारिबे ताले टिके बैक करके लिखिदेबे ओके ताले हमर 8 मार्क पड़िबो एक मार्किया क्वेश्चन माने हमर जो सेमिस्टर एग्जाम होची सेमिस्टर रे थ्योरी पड़ुची 60 मार्क प्रैक्टिकल होची 25 मार्क इंटरनल होची 15 मार्क तो जो सेमिस्टर होची सेमिस्टर रे हमर फिल इन द ब्लैंक्स किबा वन वर्ड आंसर किबा मल्टीपल चॉइस एमती करिकरी 8टा क्वेश्चन आछी मैक्सिमम मल्टीपल चॉइस तो आसेनी वन वर्ड आंसर आसे नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स आसे तो जो फिल इन द ब्लैंक्स आछी हमर एक मार्किया क्वेश्चन 8टा आसीबो 8 मार्क रो देन 1.5 मार्क्स रो शॉर्ट नोट आसीबो 8टा 12 मार्क देन 2 मार्क्स रो 8टा शॉर्ट नोट आसीबो 16 मार्क्स देन लॉन्ग क्वेश्चन 4टा आसीबो 6 मार्किया 24 मार्क तो टोटल 60 मार्क्स रो थ्योरी देन प्रैक्टिकल एंड इंटरनल मार्क विभिन्न प्रकार कॉलेज ऊपर डिपेंड करछि सेमानकर केमितिका एग्जाम हबो कोठी एग्जाम हबो एंड इंटरनल क्वेश्चन पैटर्न निज निजर कॉलेज ऊपर डिपेंड करछि ओके ताले स्टार्ट करबा हमर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नु लिखि रखंतु फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट इज टिश्यू जेहेतु सिलेबस टिके भास्ट रोचे से क्वेश्चन टिके अधिक रहिबो तो मु ट्राए करूची मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन आपण मानको दबा पई तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखंतु व्हाट इज टिश्यू डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज नेक्स्ट डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट simple tissue. Next, what is meristematic tissue? What is meristematic tissue? Give the general characteristics and classification of meristematic tissue. Give the general characteristics and classification of meristematic tissue. Okay. Next, number 4 long question. Briefly describe cytodifferentiation of tracheary elements. Next, what is shoot apex? Describe briefly on organization of shoot apex. Next, what are permanent tissues? What are permanent tissues? ठीक है हाथ स्पीड करके लिखंतु describe briefly different types of permanent tissues present in plant. Describe briefly different types of permanent tissues present in plant. Next, what are ergastic substances? What are ergastic substances? Describe various ergastic substances in plants. Next, what are vascular bundles? What are vascular bundles? Describe different types of vascular bundles in plants. Next, give the anatomy of dicot stem. Give the anatomy of dicot stem. Next, give an account on secondary growth in stem. Give an account on secondary growth in stem.
Next, what is vascular cambium? What is vascular cambium? Describe structure, function and seasonal activity of cambium. Next, give the anatomy of dicot leaf. Give the anatomy of a dicot leaf with well-labeled diagram. With well-labeled diagram. आइदर एग्जाम रे डाइकट लीफ पचारि पारे किंबा डॉर्सी वेंट्राल लीफ मध्य पचारि पारे तो कंफ्यूज हेबेनी दुटा जगह आंसर पूरा पूरी सेम सो एठी एनाटॉमी ऑफ डाइकट लीफ पचारिबा जहा एनाटॉमी ऑफ डॉर्सी वेंट्राल लीफ मध्य पचारिबा सैया नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्क्राइब ब्रीफली ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट अपेक्स नेक्स्ट डिस्क्राइब एनाटॉमी ऑफ dicot root with diagram. Next, briefly describe secondary growth in root. Secondary growth in root. Next, what are lateral root? What are lateral root? Describe the origin of lateral root. Next, what is wood? What is wood? What are various types of wood found in plant? What are various types of wood found in plant? Next question, describe about the epidermal tissues. Describe about the epidermal tissues and tissue system in plants. Next, what are trichomes? What are trichomes? Give some examples of different types of trichomes. Give some examples of different types of trichomes. Next, give the anatomical adaptation of hydrophytes. Give the anatomical adaptation of hydrophytes with proper diagram. Next, what is stomata? What is stomata? Describe about its structure and classification. Okay? सो ये मैक्सिमम मु 19 ରୁ 20टा क्वेश्चन बोधे डाकिथि लॉन्ग क्वेश्चन एंड जेहेतु सिलेबस टिके अधिक रोचे तो ओबियसली बेसी सिलेक्शन करके पढ़ाटा ठीक नुहे एग्जाम रे क्वेश्चन टिके एपट सेपट करके आसूची जो गुड़ाक लॉन्ग क्वेश्चन हवा कथा ही नुहे से गुड़ाक भी बेले बेले लॉन्ग क्वेश्चन पलि आसूची किंतु मु या भितर जेतिकी भी क्वेश्चन डाकिले लॉन्ग क्वेश्चन जदि सेतिकी प्रैक्टिस करदेबे ताले लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क्स 1.5 मार्क्स ता सहित जेतिक सब एमसीक्यूज क्वेश्चन बा वन वर्ड क्वेश्चन आपनकर आसीबा से सब मध्य क्लियर हे जिवो नोट्स मु ऑलरेडी अपलोड कर देछि टेलीग्राम चैनल जो माने टेलीग्राम चैनल विषय जानि नांती मु कहि रखुछि पीएम बायोपैशन एकेडमी गोटे टेलीग्राम चैनल मध्य अछि तळे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देबी जानतु टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु सर्च करंतु CORE-5 बॉटनी आपनकर सब नोट्स मिल जिवो CORE-6 रा भी नोट्स अछि CORE-7 रा भी नोट्स अछि बस नोट्स देखिके लेखा स्टार्ट करंतु जते शीघ्र आपन माने नोट्स लिखि देबे सेते शीघ्र आपन माने भलसे प्रिपरेशन करि पारिबे एंड सबुठ बड़ जिनस होची बुक्स को बुक्स फॉलो करिवे निज कॉलेज रो लाइब्रेरी रू सीबीसीएस पैटर्न बुक्स इश्यू करके आनिबे जो जो पेपर भी आपण माने एग्जाम दउचंदे सपोज CORE-5 एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म्स आपण मानकर पेपर रो नेम सो लाइब्रेरी जाके आपण माने इश्यू करिवे एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म रो सीबीसीएस पैटर्न बुक से बुक रे बढ़िया से पूरा नोट हेकरी सब जिनस थाए जति कि आवश्यक सेमिस्टर एग्जाम पई सेति कि थाए एंड बही पछाडे किसी एक्सरसाइज क्वेश्चन मध्य थाए गोटे यूनिट सरला पर किसी क्वेश्चन थाए यदि से क्वेश्चन को आपण माने प्रैक्टिस करछन ताले एग्जाम रे आपनकर से क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो तो जाई कि एबे ही कॉलेज रो इश्यू करंतु बुक्स देन आपनकर जहा जहा भी सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन डाकेली ताकू लेखि कि एबेठू नोट्स रो नोट बनै करी प्रैक्टिस करबा स्टार्ट करंतु नेक्स्ट एबे कोन देखिबा हमर शॉर्ट क्वेश्चन मु एकाथरे का आपण मानकू 2 मार्क्स 1.5 मार्क्स एंड 3 मार्क्स जहाँ जहाँ भी शॉर्ट नोट अच्छी मिसई की डाकी देवी मिसई की कौन पे डाकी
जदि आपण मानक मु 3 मार्क्स गोटे क्वेश्चन डाकी दूसरी कि सपोज से 1.5 मार्क्स आसीगला ताल आपण मैंने आराम से लिखिपारे कहीं 3 मार्क आमको मैक्सिमम 5 रू 6टा पॉइंट लिखार अच्छी 1.5 मार्क्स आमको 2टा पॉइंट लिखार अच्छी ना कि जदि मु गोटे क्वेश्चन डाकीदेवी सपोज कोलेन काइमा मु 1.5 मार्क जदि मुझे डाकि किंतु सेटा जदि 3 मार्किया आसीगला आपण मैंने बढ़े लिखिपारे कि कहीं आपण मैंने अलरेडी 2टा पॉइंट पढ़ी जाइए 3 मार्किया अधिक लिखिपारे कि लिखिपारे से मुझे सबुतिक मिसई मिसई डाकीदेवी मैंने आप सबुतिक क्वेश्चन 3 मार्क प्रिपेयर होगी जी जद्वारा कि ता भर जो क्वेश्चन 1.5 मार्क आसो आप काटिकी लिखिपारे 2 मार्क्स आसे काटिकी लिखिपारे एंड 3 मार्किया तो अलरेडी आपने प्रिपेयर ही होचंती। तो मैक्स टू मैक्स मु 60टा क्वेश्चन आपण मानकु देबी 50 रू 60टा क्वेश्चन जो क्वेश्चन के ऑलरेडी आपण माने लॉन्ग क्वेश्चन ने देखि सारिबेनी जो माने जाकि नोट्स देखिबे से माने जानि परिबे जे ऑलरेडी शॉर्ट नोट भितर मैक्सिमम क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन भितर ही अछि बस मो शॉर्ट क्वेश्चन एते गुडा डाकिबार ताले रीजन कोन ना जानि परिबे एग्जाम रे केमितिका क्वेश्चन आसीबो बेले बेले क्वेश्चन टिके बुले की पळे आसे जोदर कि पिला माने आपण सब जानिथिबे आंसर पढी कि जाउछन माने जानिचंती आंसर लेखिबा को टिके प्रॉब्लम हुई एटा गोटे क्वेश्चन कोठु आसीगला केमिति आसीगला तो टिके कंफ्यूजन हुए नै कि सेति पई मो पूरा सबुतिक क्वेश्चन डाकी देबी जेमिति जोठु जो प्रकार भी क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबो बेस्ट करके आसीबे ओके। तो लिखंतु इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स फास्ट शॉर्ट नोट व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन सिस्टमैटिक्स टिके हाथ स्पीड करके लिखंतु जेतो शॉर्ट क्वेश्चन टिके स्पीड आमे लिखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट व्हाट इज फार्माकोजेंसी। Next, application of plant anatomy in forensics. In forensics, forensic किंबा forensic science. Next, application of plant anatomy in pharmacogency. Next, define tissue. Next, difference between simple tissue and complex tissue. Next, what is meristematic tissue? Next, what are the types of meristematic tissue? Next, characteristics of meristematic tissue. Next, classify the meristematic tissue on the basis of position. Next, characteristics of parenchyma tissue. Next, collenchyma. Next, sclerenchyma and its types. Sclerenchyma and its types. Next, difference between xylem and phloem tissues. Next, what are complex tissue? Give example. What are complex tissue? Give example. Next, what are simple tissue? Name different types of simple tissue. Next, tracheids and vessels. Next, what are tracheary elements? Next, difference between protoxylem and metaxylem. Next, what are sheave elements? SIEVE. What are sheave elements? Next, name the different component of xylem and phloem. Next, what is PCD? PCD means programmed cell death. What is PCD? Next, cytodifferentiation of sheave element. आउ थरे कहि रखुची cytodifferentiation of sheave element. Next, what is plasmodesmation? What is plasmodesmation? Write about its function. Next, what are pits? PITS. What are pits? Difference between simple pits and bordered pits. It is a question. Difference between simple pits and bordered pits. Next, what are the function of pit? Next, what is wall ingrowth? Next, what are transfer of cells?
or transfer cells. What are transfer cells? Write about its function. Next, incrustation. Incrustation. Next, adcrustation. Next, cystoliths. Cystoliths. Next, name the different ergastic substances occur in plant. Next, starch grain. Starch grain. Next, nitrogen reserve. Nitrogen reserve materials in plant. Next, different types of mineral crystals found in plant. Next, tunical corpus theory. Next, what is apical cell theory? Next, vascular bundle. Next, anatomy of monocot stem. Next, what are vascular cambium? Write its function. Next, anatomy of monocot leaf. Next, difference between dicot and monocot leaf. डाइकोट को कौन कह जाए डॉर्सिवेंट्रल कह जाए मोनोकोट को कौन कह जाए आइसोबाइलेटरल कह जाए तो ये मुझे क्वेश्चन डाकिले आपको डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ एग्जाम रे डायरेक्ट डाइकोट एंड मोनोकोट न देकी से मुझे एमती पचारि पारे डिफरेंस बिटवीन डॉर्सिवेंट्रल एंड आइसोबाइलेटरल लीफ आंसर से सेम रहिबो बस डाइकोट बदलले डॉर्सिवेंट्रल एंड मोनोकोट बदलले आइसोबाइलेटरल तो ब्रैकेट करके लिखि दियंतु डाइकोट रे डॉर्सिवेंट्रल एंड मोनोकोट रे आइसोबाइलेटरल नेक्स्ट most important cranch anatomy. Next, histogen theory. Next, corper cap theory. KORPER corper hyphen KAPPE corper cap theory. Next, root cap. Next, quiescent center of root. Next, difference between मोनोकोट एंड डाइकोट रूट या पूर्व मु लीफ डाकी मोनोकोट एंड डाइकोट लीफ एवं डाकुची मोनोकोट एंड डाइकोट रूट नेक्स्ट एंडोडर्मिस वर्सेस एक्सोडर्मिस एग्जाम रे मे भी एंडोडर्मिस गोटे अलग शॉर्ट नोट होकर आसीपे एक्सोडर्मिस गोटे अलग शॉर्ट नोट होकर आसीपे कि एंडोडर्मिस डिफरेंस वर्सेस एक्सोडर्मिस तीन मार्किया क्वेश्चन आसीपे से एकाथर के एंडोडर्मिस वर्सेस एक्सोडर्मिस डाकदेली जदि 1.5 मार्क क्वेश्चन खाली पचार व्हाट इज एंडोडर्मिस तो ऑटोमेटिक आप लिखिपारे एंडोडर्मिस विषय ओनली एंडोडर्मिस विषय जदि एग्जाम रे पचारुची खाली एक्सोडर्मिस विषय खाली एक्सोडर्मिस भी लिखिपारे से डिफरेंस करके पढ़ीदेले कौन हम ना जदि सिंगल क्वेश्चन भी आसमें अटेम्प्ट करें okay next root stem transition next causes of anomalous secondary growth in stem anomalous secondary growth in stem next what are rays what are rays and axial parenchyma next sapwood and heartwood next name the axially and radially oriented elements in wood axially and radially oriented elements in wood next what are ring what are ring and diffuse porous wood next difference between early wood and late wood next composition of periderm next cuticle next epidermis next what is laticifers in plants next describe role of epidermis in protective system of plants next
Hydrophytes versus xerophytes. Next, trichomes. Next, difference between uni and multicellular, comma, glandular and non-glandular trichome. Unicellular and multicellular trichome, then glandular and non-glandular trichome. Next, stomata. Next, what do you mean by mechanical tissue? Give different types of mechanical tissue in plant and its function. Next, function of trichome. Next, collenchyma and mechanical tissue. Our question is the chata question. Collenchyma and mechanical tissue. Next, role of sclerenchyma. Role of sclerenchyma in mechanical support to the plants. In mechanical support to the plants. Next, what do you mean by protective system in plants? What do you mean by protective system in plants? Next, what are the various protective structure in plants? What are the various protective structure in plants? Next, types of stomata. Next, reaction wood. Next, component of vascular bundle. Next, periderm. Okay, बस ये आमर सरीगला शॉर्ट नोट जहाँ जहाँ आम इम्पोर्टाट 1.5 मार्क्स शॉर्ट नोट 2 मार्क्स शॉर्ट नोट 3 मार्क्स शॉर्ट नोट सबकि आम डिस्कस करदे ताठू तो आगे आम लंग क्वेश्चन डिस्कस करदे। आई होप कि समस्ते बहुत भल भाव में जानीपारे कौन कौन लंग क्वेश्चन कौन कौन शॉर्ट नोट जदि लिखिपारि ना टे बैक कर दिंतु वीडियो को पॉज कर लिखंतु। टेलीग्राम रे ऑलरेडी नोट्स अपलोड हो सारी जाकि डाउनलोड करूँ ताकू लिखंतु। प्रिंट आउट बाहर करते प्रिंट आउट बाहर कले आपने जानीपारे कौटी कौन केमती लिखाई तो लेखा प्रैक्टिस करूँ बेस्ट रही आप। तो आज आम देखले CORE-5 सिलेक्शन क्वेश्चन बहुत शीघ्र CORE-6 एंड CORE-7 मुझे आसुच्ची एंड आज ही आणिकी आसुच्ची। तो प्लीज समस्ते वीडियो देखते जब वीडियो हेल्पफुल रोचे ताले लाइक करूँ जिते सांग मैंने अच्छा बटनी समस्त को शेयर करूँ सारा ओडिशा रे एंड प्लीज जो मैंने सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब भी कर दिंतु। थैंक यू।